हेलो एवरीबॉडी, हम आज जा रहे हैं वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी डिगबॉय में। सो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को खासियत बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, इसी पॉइंट से आप देखिए एकदम स्ट्रेट दिखेगा आप लोगों को वो जो रोड है। सो दिस रोड इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेट एंड इट इज़ ऑफ 12 किलोमीटर। और डिगबॉय जाते हुए आपका जो साइड व्यू है, इट इज़ वन ऑफ द मार्वेलस व्यू एंड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिगबॉय आवर अनुसया मैम वांट्स टू से। ये नाम डिगबॉय कैसे पड़ा, इसका भी एक कहानी है। अंग्रेज लोग जब हम लोग के असम के लोगों को खुदाई करने के लिए बोल रहे थे, तो लोग तो हिंदी में नहीं बोलेंगे, तो बोल रहे थे डिगबॉय डिगबॉय, तो डिगबॉय डिग, तो उसी से नाम पड़ा डिगबॉय। लड़का खुदाई करो, डिगबॉय। ये NH38 नाम से जाने जाते थे। This was previously known as NH38, the old NH38, but right now this is not called NH38, but it is a straight road, and it was previously known as the longest straight road. Longest straight road, and now we are super excited to view this road and explore this road with its lovely scenery. Let's go. Completely straight. So हम लोग जब जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। और इसमें दिस इज द लास्ट पार्ट, और हमारे साथ है लोग सर जो हमें गाइड करते हुए लेके जा रहे हैं। सो लोग सर, समथिंग टू से। चलिए आप व्यू नज़ारा देखते हैं डिगबॉय का, रास्ते में एंजॉय करेंगे। सो ये जो कॉर्नर होता है बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है, और जो भी ये गाड़ी वगैरह जा रहा है बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट होता हुआ पहुँचेगा। यू कैन सी दिस इज लास्ट बेंड एक्चुअली। ये बिल्कुल ये वाला सीधा डिगबॉय पहुंचेंगे हम लोग इधर। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। चलते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। ड्राइवर सीट, you can see our लोग सर, and here we have got our अनुसया मैम। हमारे जो स्ट्रेट रोड है, इट इज़ मोर देन 12 किलोमीटर स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स द ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी डिगबॉय। सो ये जो प्लेस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सो सोर्स वाज माकुम। माकुम से हम डिगबॉय जा रहे हैं, और इसका साइट सीइंग देखिए, नज़ारा देखते जाइए। बढ़िया है। डिगबॉय वन ऑफ द क्लीनेस्ट टाउन इन असम, एज वेल एज डिगबॉय को ये भी माना जाता है इट इज़ वन ऑफ द लेस पोल्यूटेड टाउन इन असम। और डिगबॉय को वेल सिटी ऑफ असम नाम में भी जाना जाता है। अभी डिगबॉय बहुत सारे बाईपास से कनेक्टेड हो गया है, तो आना भी बहुत सुविधा हो गया है यहाँ का नज़ारा देखने के लिए। और ये जो है, ये पहले नेशनल हाईवे था, जैसे कि हमारे फाइन सर ने बताया, वो NH38 था। सो ये माकुम से लेके लीडू तक था, एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस NH माना जाता था। लेकिन अभी सारा नंबरिंग चेंज हो गया है, तो ये अभी और नेशनल हाईवे नहीं है, बट अर्लियर इट वाज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे। फाइन सर, आपको पता है कितना, कौन सा ईयर में डिगबॉय रिफाइनरी एस्टेब्लिश हुआ था? ये आपका 1901 1901 देयर इज अ प्रेस्टिजियस ईयर, क्योंकि 1901 साल में हमारे कॉटन कॉलेज भी स्थापित हुआ था गुवाहाटी में, और 1901 में ये डिगबॉय रिफाइनरी स्टार्ट हुआ था। और इससे पहले 1866 में हमारे यहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोग जो जंगल से जब हाथी डॉग लाते थे, उसका हाथी का पागमार्च से उन लोगों को मिला था ये तेल का संधान, और उसके बाद उसको डिग किया गया था। और आप लोगों को अनुसया मैम ने ऑलरेडी बताया ही है कि डिगबॉय डिग ऐसा बोलते बोलते उसका नाम डिगबॉय हुआ था। इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग।
Still you can see the lovely cottages made by the British. They're in Digboi. And obviously lovely scenery of the hills, or hillocks you should say. Chota mota hills hai. It's bright sunshine today and that's giving a lovely picture over here in this most beautifully made road. आगे में आपको मिलेगा असम का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेडी लैंड, राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉप्स होता है थोड़ा आगे में मिल जाएगा हमें। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको द फेमस टी गार्डन्स ऑफ असम वो मिलेगा। सो हियर petrol pump and to fuel our car for the journey. We're leaving the pump and here we're hitting the road again, the straight road. So let's go to the road again. Showing the turning, sir. This is the turning. So here is the end of the straight road. So the turning you will be getting here. और आगे में एक पॉइंट है जहाँ पे forest actually. पुराना मंदिर है और यहाँ पे भोलेनाथ का पूजा किया करता है सभी आदमी भोलेनाथ का पूजा करते हैं और हम लोग इसे लोकल लैंग्वेज में हम लोग डांगरे स्थान भी बोलते हैं, डांगरे बाबा पूजा भी बोलते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ डिगबोई से जो गुवाहाटी जाने वाला जितना भी बसेस है, नाइट सुपर्स है, यहाँ अपना माथा टेक के ही जाता है। वहाँ का ड्राइवर और हैंडमैन केयर टेकर जो होता है यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। तो इनका भोलेनाथ का आशीर्वाद हम लोग लेके ही जाते हैं।
place is called? नाजीरा की तामुली गांव। तो चलते हैं यहाँ से अभी। This place is Bogapani Tea Estate. Digboi is famous for its cleanliness also, one of the cleanly city, you can say, the well city of Assam. वर्ल्ड का सबसे पुराना फंक्शनिंग रिफाइनरी, ओल्डेस्ट रिफाइनरी जो अभी भी इन वर्किंग कंडीशन है। सो दिस इज डिगबॉय रिफाइनरी। तो लेफ्ट साइड से हम लोग जाते हैं, सो लेफ्ट साइड इट इज शोइंग देयर। जाने से हम लोग को गेट मिल रहा है। एंड दिस इज डिगबॉय CHC और द FRU यूनिट। Staying place of Digboi, go to Sun City, one of the good hotels.